Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And in today's video, I'm going to discuss some ways in which you can change your overthinking patterns. Thinking is a conscious process, but we have been trained to actually let it happen as an unconscious process. So, thoughts can keep coming unconsciously in our mind, and we all know that they're just like clouds, they pass on, they come, they go on. But for some reason, and for certain thoughts, we choose to think it again and again. And for so many of us who experience overthinking or worrying, it can feel like a process that is absolutely not in your hands or absolutely not in your control. So, what do you really do? So that you come from this state of mind to a state of mind where you are able to find solutions. Okay, and the second very important capability that you build is that you are able to feel your feelings. I read a very wonderful thing somewhere that overthinking is under feeling. Let's say there's an emotion and you feel that it is such a big emotion, as big as this. Okay, now as you start to think about this emotion, it gets bigger. You think more about the emotion, it gets bigger. You think more about the emotion, it gets bigger. Why? Because you are avoiding to feel that emotion. The moment you start to see this emotion, it gets smaller. The moment you label it that it is my anger, it gets even smaller. You try to see what this anger is trying to tell you, maybe to set a boundary, it gets even smaller. And once you completely feel it, you go back to being normal. But we are living in a world where we may have learned to avoid any kind of discomfort or negativity at all. I was listening to a psychiatrist and he was telling about his experience of how, patients, parents, or caretakers come and say that this person is thinking very negative or speaking very negative. Doctor, please change the way they are speaking, make it more positive. So the doctor said, what is positive thinking and what is negative thinking? Who made this positive thinking and negative thinking? We were not taught in psychiatry about this, okay? That a particular thought is a negative thought, a particular thought is a positive thought. This is what the psychiatrist was saying. And the concept of positive and negative in physics actually is shown as a polarity. It does not say that we don't need the negative. It does not say that the positive is more superior in the negative. It just says that these two are polar opposites. But when it comes to our experience, our mental experience, our emotional experience, we call things that are pleasant, comfortable as positive and unpleasant, uncomfortable as negative. So, what happens if your body feels that this emotion is too big for me to actually hold on to, and you may not have had the opportunity to actually learn about how you experience emotions or how you feel emotions, or you may have lived in an overwhelming way for a very long period of time? That time, you may avoid feeling the emotion itself totally, and it piles on like a garbage bin. It piles on like something that you don't want to look at too. And then your mind starts to analyze it, it starts to think it, because you are not feeling it. For example, hunger. When you feel hunger is not an emotion, it's a feeling, it's a physiological thing that you experience. And when you feel hungry, you eat. Okay, so you need to do an action based on that uncomfortable feeling. But what is happening right now is that, we don't even feel hungry because we keep eating, we keep over consuming. We have Zomato, we have Swiggy, and we have a life of comfort and convenience. And in the life of comfort and convenience, even slightest things of discomfort starts to feel like there's something wrong with you, there's something wrong with your life, there's something wrong, and you may start to actually analyze from that place. So this is one of the reasons where, we are not learning to listen to our negative emotions. So, your step one is to not call your thoughts as, oh, I am very negative as a person, or, I am overthinking, but to see that there is something that's not working for you,
whether it is in your job or whether it is in your relationships, something that's not okay and it needs to be addressed. So we need to start from this point. Second, we need to learn to label our emotions. Okay, so if you have been somebody who hasn't been able to learn and educate themselves about emotions and emotional intelligence, you can start learning about it. You can start working with people who are experts on emotional intelligence. You can go consider going to therapies that you like, that you prefer, or you can start working with emotional wellness experts. Whatever feels like your best way possible, you can do that. Whatever makes you feel comfortable is a thing. If you're somebody who has a lot of energy, but if you're not using that energy, you may end up using it in your overthinking, or vice versa. Your overthinking may drain up so much energy that you have no energy to do your day to day activities. So, you need to involve some kind of physical activity, whether it's walking, whether it is going to the gym, whether it is dance, any kind of physical movement that can help you channelize everything that's feeling stagnant in your body. This would be your step 3. And what is step 4? Step 4 is a very, very important step. Listen to people on the internet that are really, really sorted. Their minds are really, really sorted. Like, pick the top ones. If I give you a list of my favorites whose ways of thinking is something that I absolutely love, are Sandeep Maheshwari, Naval Ravikant, the professor of philosophy, Vikas Divyakirti, who is, who teaches various subjects for UPSC students. If you listen to these people, there is rationality in the way that they think about things. So we spoke about feelings already, right? So we took care of the part that wasn't rational. And I'm not saying because it wasn't rational, we should not deal with it. We should deal with it actually first. And then when it comes to, training your logical brain, you may want to train it how to think. And when you listen to people who are very, very sorted, okay, like the names that I gave you, your brain picks up patterns of problem solving from the way that they are thinking. You can read books like, there is a book called as How to Think in Graphs. Okay, so they give you various graphs or mental models to think about things. We are also going to create certain videos on specific mental models that have helped me personally, which also help my clients in building their critical thinking. Because if you see a common thread between these three people, even if they are very, spiritual, Vikas Divyakirti does not call himself that, but Naval Ravikant or Sandeep Maheshwari, they have a very scientific way even towards spirituality. Okay, so these people, they teach you how do you really question to the fundamental and believe in what is true and not believe in what is false. A lot of overthinking issues happen because people cannot see what is the reality and they are believing something that is false. Okay, they are living in something that is a story, that is a narrative, and they are not living in the truth, they are not living in the moment, they are not living in reality. For example, there was a wonderful video by Sandeep Maheshwari where he talks about this superstition of अगर एक चप्पल उल्टी होती है तो कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है. एंड ही क्वेश्चंस दैट थिंग फ्रॉम वेरियस डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, जैसे कि अगर लेट्स से कि आपने वो चप्पल उल्टी थी, ठीक है, आपने उसको सीधा नहीं किया और कुछ बुरा हो गया आपके घर में या ऐसा कुछ, तो नाउ यू विल को रिलेट दैट. एंड कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन, बाय द वे. ओके, कॉजेशन मतलब इसकी वजह से ये हुआ. अगर आपने वो चप्पल सीधी करी, ठीक है, और फिर सब कुछ ठीक रहा, तो आपको लगेगा कि ये चप्पल सीधी होने की वजह से रहा है. एंड दैट इज़ वाई सच बिलीव्स आर सच अ बिग ट्रैप. ठीक है, इनके पीछे लॉजिकल रीजन शायद पुराने ज़माने में होते थे. जैसे शाम के टाइम पे अगर आप झाड़ू लगाओगे तो लक्ष्मी चली जाएगी. तो अगर शाम के टाइम पे आप झाड़ू लगाते हो तो पहले लाइट नहीं होती थी, तो कुछ आपका वैल्यूएबल सामान मिस हो सकता था. ठीक है, उस टाइम के लिए बहुत एब्सोल्युटली अच्छा बिलीफ है. ठीक है, और अभी भी अगर आपको ये मानना ही है तो आप मानो. ओके, बट ऐसे जो चीज़ें में लोग मानते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, अरे लक्ष्मी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. रियली आपकी जो कैपेसिटी है टू क्रिएट वेल्थ, या आपकी जो कैपेसिटी है टू डील विथ लाइफ,
ये इतनी माइन्यूट चीज़ों पर डिपेंडेंट हो सकती है. लाइक रियली, कैन दीज थिंग्स कंट्रोल लाइफ? कैन दीज थिंग्स कंट्रोल द क्रिएटिविटी एंड द सीड ऑफ क्रिएशन दैट यू योर सेल्फ आर? नहीं कर सकती, राइट? तो हम जब ऐसी चीज़ों में विश्वास करने लगते हैं तो हम अपनी जो पावर है वो गिव अवे कर देते हैं. एंड वी स्टार्ट टू थिंक कि ये जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर किसी ने कोई अंगूठी पहन ली, कोई पत्थर पहन लिया, कुछ कर लिया, कि अब इसमें पावर है टू चेंज माई लाइफ. ठीक है, और आपने विश्वास कर दिया तो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से शायद हो भी सकता है. ठीक है, आई ऑल्सो वेयर अ स्नेक रिंग फॉर माई ईशा योगा सेंटर, बट आई वॉन्ट से दैट दिस ring changed my life. Otherwise, people who are into spirituality will first try to say that this is not true. Okay, this can be there. Copper has certain benefits, scientific benefits भी होते हैं, लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है. तो जो बेनिफिट एक मेटल के मुझे मिलने हैं वो मिल रहे हैं. बट शुड आई से कि मेरी सारी ज़िंदगी का क्रेडिट ये अंगूठी है? नो, एज मच एज आई लव दिस रिंग, आई वोंट से दिस अबाउट इट. ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पहनने में भी अच्छी लगती है. कॉपर हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ऑन योर बॉडी, बट नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ में ऐसे विश्वास भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप डर की वजह से नहीं कर रहे हो. बहुत फ़र्क होता है किसी चीज़ को आप समझ के उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हो. ठीक है, लाइक आई ऑल्सो लाइक क्रिस्टल्स, बट मैं नहीं कहती कि ये क्रिस्टल की वजह से मेरा बिजनेस बदल गया या ये इस क्रिस्टल की वजह से ये हो गया वो हो गया. नो, आई फाइंड देम ब्यूटिफुल. आई गॉट अट्रैक्टेड टू क्रिस्टल्स. जब तक अट्रैक्टेड थी तब तक पहने, फिर रख दिए, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ दी ओनली प्लेस ऑफ दीज थिंग्स इन माई लाइफ. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लो. पर क्या ये चीज़ें इतनी पावर होल्ड करती है आपके ऊपर कि ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है या बना सकती है? ये तभी रख सकती है अगर आप उसको देते हो. पर जब हम ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो हम हमारे माइंड को डर सिखा रहे हैं. यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू फील फियर. यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू बी fearful. Okay, and anything that is of this sort, okay, is meant to help you feel more faithful and not fearful. तो अगर कोई चीज़ आपके मन में विश्वास से ज़्यादा अंधविश्वास जगाती है, ठीक है, डर जगाती है, तो आपको वो बिलीव्स को क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा और एक बहुत साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने एक क्लियर डिफरेंस देखा अपने माइंड में. ओके, सो देयर वाज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मैंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि सर्टन काइंड ऑफ जिसको स्यूडो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या स्यूडो साइंस कहते हैं, मैंने कुछ टाइम के लिए ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके देखा कि मेरा माइंड कैसे फंक्शन करता है. एंड ऑन द अदर हैंड आई जस्ट कंज्यूम द कंटेंट ऑफ द पीपल दैट आई जस्ट सजेस्टेड. उनके साथ कुछ और 2-3 अदर पीपल like Acharya Prashant, and who are very logical in their ways. My mind functioned the best in the second. This is my experiment. तो अगर आप उल्टे सीधे पॉडकास्ट देखते हो which tell you about spirits, this, that, ये सब कुछ, all of this will make you very, very fearful. Okay, so acknowledge that a logical part of you needs a good teacher to train it to reach solutions. ठीक है, तो अगर जैसे आपकी लाइफ में आपको डर लग रहा है कि अगर मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो मेरे काफ़ी पैसे लॉस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, मेडिकल बिल्स में खर्चा हो सकता है. अगर आप ऐसे में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, एंड लेट्स से दैट एस्ट्रोलॉजर इज़ नॉट अ गुड वन. अच्छे वाले जो होते हैं, इवन आई लाइक एस्ट्रोलॉजी, बट अच्छे वाले जो होते हैं वो आपको लॉजिकली समझाएंगे और आपको अच्छे से काउंसलिंग करके भेज देंगे. बट लेट्स से कि कोई है, ठीक है, थोड़ा सा जो लॉजिकली ठीक नहीं है, दे दिया उसने आपको बड़ा सा कोई पत्थर पहनने के लिए. वहीं पर अगर आप लॉजिकली सोचो तो उस पत्थर के 1/3 प्राइस में आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हो. तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता भी है तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है बिटवीन वॉट यू आर कंज्यूमिंग ऑनलाइन. तो जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखती भी हूँ
तो मैं उनसे ऐसे सीखती हूँ कि इसको लॉजिकल वे में कैसे देखें। और एस्ट्रोलॉजी में एज अ रिसर्चर सीखती हूँ, मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनमें से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जिनको खुद को भी अच्छा लगता है, देखती हूँ कि जो बिहेवियर पैटर्न्स हमने डिकोड किए हैं थ्रू आवर कॉन्वर्जेशन, इसमें से कौन से चार्ट में भी दिख रहे हैं, कौन से नहीं दिख रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक अ बिग पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस राइट नाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट एंड माई स्टडीज़, बट आई नेवर लेट इट टेक ओवर माई सैनिटी, बिकॉज मैं कभी भी फियर से ऑपरेट नहीं करना चाहती हूँ, स्पेशली इन माई प्रोफेशन. So the more and more, I keep a very research oriented scientific approach. I'm able to do my best as a coach. I'm able to do as best as a client, and with when I'm working with my coaches, my mentors, and I'm able to do best as a human being also. Okay. सो अगर आपके आसपास भी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा डर में मानते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग टाइम and spending time with people who are having that kind of a scientific mindset, inquiry mindset, and research mindset, you will see a lot of changes in your life.